Good evening, ladies and gentlemen. Respected Shri Ashokji Saraf, Chairman DSIMS, DSGS, and President RSET, our celebrity speaker of the day, Mr. Devdad Patnayak, respected trustees who are attending this session today, Dr. Babu, Director DSIMS, Dr. Sarita Vichore, Director DSGS, faculty colleagues, and all my dear students. I, Dr. Sarika Jain, on behalf of DSIMS and DSGS, take this opportunity to welcome you all for the celebrity talk. The idea for this talk was mooted by our chairman, Shri Ashokji Saraf. We are very thankful to you, sir. It is important for all of us to know the perspectives of how to bounce back to normalcy after COVID from the legend himself. Today we have with us Mr. Devdad Patnayak, famous mythologist, speaker, illustrator, and author. Mr. Patnayak writes on the relevance of mythology in modern times. Known for his innovative ideas and simple explanations, he defines myth as cultural truth that map the human mind. In the last 25 years, he has written and illustrated over 50 books on the subject. He is a reputed columnist with Economic Times, The Times of India, The Hindu, Dainik Bhaskar, and Dainik Jagran Sentimenti. His TV shows such as Business Sutra and Devlok have been much admired by the young and the old alike. Former advisor to companies such as Jio and Disney, he is much sought after speaker on leadership, culture, change, and governance. He decodes ancient stories, symbols, and rituals so that we can appreciate the complexity of human cultures and human emotions. His knowledge, he believes, will help us to be better, smarter, and wiser in work as well as life. Currently, his focus areas is in dharmic leadership and ahimsa management. I could not stand between you and Mr. Devdad, but before I would request Shri Ashokji Saraf, Chairman, DSIMS and DSGS, and President, Rajasthani Sammelan Educational Trust, to kindly say a few words. Sir, may I request you, please? Thank you. Good evening, everyone, and a warm welcome to this talk by Shri Patnaik on leadership. I would like to thank Shri Devdad Patnaik for taking time out and being with us today. I am a very big fan of yours, sir, and I listen to many of your videos, and I feel very privileged to be speaking to you personally and looking forward to a nice talk from you today. We are happy to have with us all the trustees and managing committee members of Rajasthani Sammelan, as well as our students, more than 100 in number. Durga Devi Saraf Institute of Management Studies and Durga Devi Saraf Global School are a part of Rajasthani Sammelan Educational Trust, which is in the forefront of education in the western suburbs. We educate more than 16,000 children and employ 800 staff members. Durga Devi Saraf Institute of Management Studies and our global school has been set up by the magnanimous donation of my father, Sri Mavi Prasad Ji, who believes that education is the best gift that we can give society. And it is his dream to make our management school as one of the leading management schools in the city of Mumbai and in the country. Rajasthani Sammelan is also a women empowerment center because here we educate more than 10,000 girls and employ 5,000 female staff members. And it is our belief that by educating the female staff, educating the ladies, we do a great service to the community. We run 4 schools, 4 degree colleges affiliated to University of Mumbai, 2 AICT approved management schools, 2 hostels. In today's challenging times, we are all faced with disruption, and we have to work to find opportunities in these adverse times. And we look towards Mr. Patnaik telling us how the post-COVID period will give us opportunities and how we can face these challenges. Because I firmly believe that after every night, there is day. The night may be longer. We have to survive the night. And if you work hard, you will survive the night and see better days.
I will not come in between you and Mr. Patnaik, and I look forward to a great talk. Thank you, Mr. Patnaik, once again for being with us, and I look forward to hearing you. Thank you. So much. Thank you so much for inviting me. So my name is Devdad Patnayak, and I write on matters of governance and management, but my focus area is mythology. So I study stories from around the world. So not just Indian stories, I study stories from America, from Europe, from Middle East, from Africa, from Japan, China. And through stories, I try to understand how people think. So when we use things like Indians are different from the West, we use this word very casually. People say it and like, Indians are different. We feel the difference, but we don't exactly know how to pinpoint the difference. We don't know what exactly we mean by what's that difference when we say use the word Indian. And what I will do today is try to explain to you the difference between what we use the word Western. Unfortunately, some people use the word modern, but modern, unfortunately, I'm using the word because people think Western way is modern way. And the globe, the whole world is not just the West, it's also the East, and it is also India, which stands between the East and the West. So on the West, we have got Middle East, we have got Europe, we have got America. On the East, we have China, on Japan, and India stands in between. And these three areas think very differently. So the Chinese way of thinking is very different from the Indian way of thinking. Indian way of thinking is very different from the Western way. I'm using the word different. I'm not using the word better. Be very careful of this because we sometimes think that, India is better or West is better or China is better. They are just different ways of looking at life. Let's understand this difference. And I will begin by using a very simple example. We nowadays watch superhero movies, right? Marvel comics, DC comics. So we have heard of Superman, we have heard of Batman, and we all watch them on TV shows. And they're very popular. People love Superman, people love Batman. We love these superheroes. And in India, for the last 20 years, people have been trying to create an Indian superhero, but they have not been able to. And I keep getting invited by a lot of filmmakers कि देवदत्त हमको superhero movie banana hai. And they are not able to because something is not working. And I keep trying to explain to them why it doesn't work. How Indian stories are very different from Western stories. In India, we don't use the word, the superhero concept doesn't come. If a hero concept doesn't come, we use the word avatar. The avatar and superhero are very different from each other. And when you understand this, you will understand one major difference between Indian thought and Western thought. And I'll focus on something simple and how it relates to your day-to-day life today. So when you read a superhero comic book, any like Superman or Batman, they're always wearing masks. They're always having a secret identity. They are normal. They are trying to hide themselves. They don't try to tell people how great and powerful they are. So for example, Superman has an identity called Clark Kent. He's a journalist. He's a very ordinary man. And then he becomes the superhero. He's hiding everybody that he's very, very powerful. And when he goes out, he wears this costume where nobody can recognize him. So there is a man and there is a Superman. So you have Batman. Batman is a very rich fellow. He's Bruce Willis. He has a lot of money and he does all kinds of technology. But then he wears a mask and then he enters the city secretly to solve the problems of society. And the superhero always comes to solve problems. There is a villain, supervillain, superhero comes, he defeats the supervillain, and everything is okay. So that is how the story is told. And they're very popular. Spider-Man is the same. Spider-Man is Peter Parker. He's a young boy. He has issues, but then he wears a mask. He has a superpower. Again, he covers his face and he solves problems. So one point you notice is there are ordinary people who become extraordinary. Two, they have extraordinary powers.
It is always secret identity. Third, they solve problems. Very popular, very, very popular. Everywhere in Hollywood, that is the pictures which is being made billions of dollars. How is it different from the idea of avatar? How is it different from, people told me that the Hanuman bhi to hamara Superman hai, and they keep using these words. Ram bhi superhero hai. They keep using these words, superhero. I said, nahi, wo superhero nahi hai, wo avatar hai. So they said, what is avatar ka matlab kya hua? Avatar be the superhero. Nowadays people play video games and they have something called avatar. They will use different masks and they'll say, you have many avatars. They keep using this word. And nowadays there's even a Hollywood film called Avatar. And the real reason is because these people, and I give a lot of consultant to even Hollywood studios, they don't understand something very, very big. Avatar means, the word avatar coming down. Avatarana means to come down. That is the meaning of the word avatar, comes from someone from above who comes down. So someone who is extraordinary becomes ordinary. A superhero is an ordinary man who becomes extraordinary. An avatar is an extraordinary person who becomes ordinary. It is the opposite. Why would someone who is extraordinary become ordinary? Who is this extraordinary person? So when you read this books, Indian books, they will say there is Vishnu Bhagavan who sits in Vaikuntha. He is immortal and he's all powerful, but he wants to go down to earth. Now, when he goes down to earth, he takes the form of a prince called Ram, which means he takes birth in a normal family and he's a normal person. So he's extraordinary in heaven, but on earth he becomes normal. Very ordinary person. Or he becomes a cowherd called Krishna. So he can be a prince. He can be a cowherd. Look how different they are. Prince is from a very big family, rich family, powerful family. Or he can be an ordinary cowherd who goes to the village, takes the cows out to pasture, plays a flute, wears vanamali, wears forest flowers, is not a rich and powerful person. Ram is the eldest son. Krishna is the youngest son. Ram is royal. Krishna is commoner, an ordinary person. अभी देखो कितना फर्क है राम और कृष्ण में, और दोनों को हम अवतार बोलते हैं. We call them both avatar. So they are extraordinary beings who have become ordinary and are walking amongst us. कितना different है from Superman, who is an ordinary person who becomes extraordinary and solves problems. तो problem solve करने के लिए in the Western world से आप extraordinary जब बनोगे तुम problem solve करोगे. इंडिया में बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमको ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना पड़ेगा. Why are they saying something totally opposite? Because वो बोल रहे हैं इंडिया में कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अहंकार का है, ईगो का है, और कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में. और जब आपको ईगो के साथ डील करना पड़ता है तो आपको ऑर्डिनरी बनना पड़ता है. अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओगे तो जो ईगो आदमी है जिसके पास, वो और उसको डर लगेगा एंड he'll become very hostile. वो नर्वस हो जाएगा, he'll get nervous and he'll become even more difficult to handle. तो उसको हैंडल करने के लिए भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा. बिकॉज लाइफ में एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों का ईगो. जहां पे भी जाओ आपको मैनेज करना पड़ेगा. एंड दिस इज द ग्रेट इंडियन लेसन दैट इज टॉट कि भैया प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है दुनिया में, अहंकार का प्रॉब्लम. जिस दिन तुम अहंकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, हाफ योर प्रॉब्लम्स विल गो अवे. लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, anywhere you have problems, it is because of ego. And that is why भगवान भी बोलते हैं कि मेरे को छोटा बनना पड़ेगा, because ये इतना अपने आप को बड़ा समझ रहा है. भगवान is infinite, अनंत.
लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं, अभी ये बहुत पावरफुल है, अपने आप को बहुत महान समझता है, तो इसके सामने मैं झुक जाऊंगा, बिकॉज जब तक झुकूंगा नहीं ये सीखेगा नहीं. So let us now take case study, because you all are all business school students. तो case study, तो stories are case study. तो case study से देखते हैं. तो एक case study है रावण. So रावण is very rich. वो सोने की लंका में रहता है. So he's very rich, very intelligent. उसके पास 10 सर है, इतना ज्ञान है उसके पास कि एक सर से नहीं बनता है, 10 सर है उसके पास. He is very very rich. उसके पास प्राइवेट जेट है, हम उसको पुष्पक विमान बोलते हैं. तो प्राइवेट जेट भी है, सब कुछ है उसके पास. संस्कृत स्कॉलर है, हम लोग बोलेंगे कि वेदों का ज्ञान है, म्यूजिशियन है, म्यूजिक भी जानता है, आर्किटेक्चर भी जानता है, मेडिसिन भी जानता है, वेरी वेरी एजुकेटेड फेलो. तो उसके सामने एक दिन एक बंदर आता है, एक वानर. और वानर आता है तो वानर वो जंगल में उसके गार्डन में बहुत हलचल मचाता है, तो सोल्जर्स जाते हैं और उसको पकड़ के लेके आते हैं और ये वानर को लेके आते हैं. तो वानर जो बंदर है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रावण. तो रावण, इमेजिन रावण बड़े पैलेस में, सोने की लंका, बड़ा पैलेस, सब घर उसका, उसके सामने एक बंदर आता है. और बंदर लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज बंदर है, वो संस्कृत में बात करता है, एकदम पॉलिश्ड परफेक्ट संस्कृत बात करता है. अभी रावण को लगता है कि ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, ये संस्कृत में बात कर, तो समथिंग विचित्र है, देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट हिम. और बंदर बोलता है कि तुमने एक स्त्री को किडनैप करके अपने घर में रखा है, इतने पढ़े लिखे होके किसी दूसरी की पत्नी को घर पे लॉक करना ठीक लगता है? नहीं लगता है. वो और स्त्री की जो पति है, हस्बैंड, वो राम है, मैं उनका दूत. तो आई हैव कम एज राम दूत हनुमान, मेरा नाम हनुमान है. तो वो अपना परिचय देता है और बोलता है कि देखो, मैं एक राजा का दूत हूं, तो राजदूत हूं, मेरे को एक जगह आसन दो, लेट मी सिट इन वन प्लेस, बिकॉज नाउ आई विल टॉक टू यू, बिकॉज आई एम ए representative of a king whose wife you have kidnapped and locked in the room. और रावण बोलता है कि ये अपने आप को he's thinking is over, ये तो बंदर है, ये कुछ तो जाल खेल रहा है. हाउ कैन ही स्पीक संस्कृत? और ये अपने आप को बोल रहा है कि ही इज अ ग्रेट मैसेंजर, ओवर स्मार्ट बन रहा है. तुम जानवर हो, तुमको हम आसन नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव यू अ प्लेस टू सिट. तो हनुमान बोलता है कि देखो, तुम संस्कृत के स्कॉलर हो, वेद पढ़े हो, बेसिक कर्टसी होता है, कोई भी आपके घर में आए उसको आप बैठाते हो, चाय पिलाते हो, पसंद हो ना पसंद हो, यू हैव टू बी कर्टियस, रिस्पेक्टफुल. रावण भड़क जाता है कि देखो कितना अपने आप को, अपने आप मेरे को सिखाने आया है ये आदमी. और बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, तो जानवर है, जानवर को कोई आसन सीट नहीं देता. तो हनुमान बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं अपना सीट अपने खुद बना लूंगा, अपनी पूंछ से सीट बनाता हूं. और वो सीट बनाता है. और वो उसको पता है कि रावण बहुत ही इनसिक्योर है. देखो, अहंकार और इनसिक्योरिटी से जन्म लेता है. पढ़ा लिखा है, अमीर है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी कर्टसी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो इनसिक्योर है. हनुमान अपना टेल से ही मेक्स ए सीट, and that seat is very big, it is bigger, higher than Hanuman seat, sorry, रावण सीट. तो रावण को इनसिक्योर लगता है कि अरे मैं उस सर ऊपर करके उसको कैसे देखूं, मैं नीचे देखूंगा उसको. रावण और इनसिक्योर हो जाता है, भड़क जाता है, इसके पूंछ को जला दो. हनुमान, अब उसका पूंछ जब जलाते हैं तो हनुमान जंप्स एंड वो अपने पूंछ से इसके राजमहल को जला के भाग जाता है. ये पूरी जो स्टोरी है, यहां पे हम देखते हैं कि एक एजुकेटेड मैन हु इज नोज ऑल द नॉलेज, सब उसके पास ज्ञान है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है. ही हैज गॉट,
उसके इतना पढ़ने के बाद भी ही इज ईगोटिस्टिकल। ईगो कहां से आया? What is the point if you have all the money in the world, all the power in the world, all the knowledge in the world, फिर भी अहंकार क्यों है? अहंकार जाना चाहिए ना। So people say that in life, all of you all will be saying that I want to be successful in life. तो लोग बोलेंगे सक्सेस कैसे होगा? सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, वेरी गुड, टिक मार्क। मेरे को फेमस बनना है, टिक मार्क, वेरी गुड। मेरे को पावरफुल बनना है, टिक मार्क। मुझे आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, एजुकेट करके मुझे कुछ इन्वेंट करना है, मुझे कुछ इनोवेट करना है, मैं एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सब रावण ने करा। प्रॉब्लम क्या था? ये सब करने के बाद वो अहंकारी कैसे रहा? एंड दैट इज द स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ रामायण की इतना पाने के बाद भी why is he so insecure? And that is the big lesson of Indian tradition. तुम जहां जाओगे देखोगे लोग बहुत ही इनसिक्योर है। इनसिक्योर के लिए अलग शब्द है अहंकार। So ego is a very big English word. Simple English word is insecure. छोटी छोटी बातों में हम इनसिक्योर हो जाते हैं। कृष्ण ग्वाला है। देखो भगवान, there is a very famous dialogue between, you must have heard of a character called Karna. Karna is very famous. महाभारत में लोग कर्ण के बारे में बहुत बात करते हैं। कर्ण was very talented, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। वो स्कूल में जाना चाहता था। स्कूल का टीचर जो था द्रोणाचार्य था, वो बोलता कि नहीं, मैं केवल राजपुरुषों को पढ़ाता, तुम राजपुरुष नहीं हो, मतलब तुम करेक्ट, तुम्हारा सरनेम ठीक नहीं है, यू आर नॉट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। फिर वो जाता है कहीं और, बोलते कि नहीं, कोई बोलता है कि रॉयल फैमिली को पढ़ाएंगे, कोई बोलता है ब्राह्मणों को पढ़ाएंगे, तो इस हाउ विल आई स्टडी? तो वो अपना भेष बदल के परशुराम जी के पास जाके सीख जाता है। ही लर्न्स, स्टोरी का डिटेल मत, लेट्स नॉट नो, ही लर्न्स हाउ टू बिकम अ ग्रेट आर्चर, बहुत बड़ा आर्चर बनता है। और जब आता है तो लोग बोलते हैं कि आर्चर है। नो, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। महाभारत में दो पात्र होते हैं। महाभारत एपिक, व्हेन यू रीड, देयर आर द गुड गाइज एंड द बैड गाइज। ऐसे हम लोग इंग्लिश में समझाते हैं, जो अच्छे हैं और बुरे हैं। हम बोलते हैं कि पांडव अच्छे हैं और कौरव बुरे हैं। लेकिन जब कर्ण आता है तो पांडव विल से कि अरे तू तो ड्राइवर का बेटा है, सुतपुत्र, योर फादर इज अ ड्राइवर, और उसको इंसल्ट करते हैं। आज भी होता है, स्कूल कॉलेज में सब जगह होता है कि अरे हु इज योर फादर, माय फादर इज अ रिच मैन, हु इज योर फादर, कहां का चपरासी है, ये है वो, इंसल्ट करते हैं लोग। वैसे ही महाभारत में पांडव जो अच्छे लोग हैं बोलते हैं कि सुतपुत्र है, और कौरव बोलते हैं कि नो नो वी डोंट केयर, तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, हम टैलेंट लेते हैं, तुमको प्रमोशन देते हैं, जॉब देते हैं, तुमको अंग देश का राजा बनाते हैं। तो सडनली जब स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, हमको बोला जाता है कि अरे देखो, हीरो पांडव है, विलेन कौरव है। लेकिन जब ये कर्ण की स्टोरी आती है, सब उथल पुथल हो जाता है। हीरो हैज टू सपोर्ट कर्ण, बट हीरो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक यू, योर फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है तुम्हारा। और जो विलेन है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, मैं तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड आई डोंट केयर, आई विल गिव यू सपोर्ट, मैं तेरे को जॉब दूंगा, प्रमोशन दूंगा, सब अपॉर्चुनिटी दूंगा। नाउ द स्टोरी हैज चेंज्ड, एंड नाउ कर्ण इज लाइक, यू नो, द कौरवास आर गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कौरव पांडवों का जमीन हड़प लेते हैं, उनके पत्नी को पब्लिकली अब्यूज करते हैं। अभी कर्ण बोलता ना, कर्ण को धर्म संकट आता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को जॉब दिया, सब प्रमोशन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये अच्छे लोग नहीं है। मतलब क्या, किसी का जमीन हड़प रहे हैं, किसी की पत्नी को अब्यूज कर रहे हैं। हु शुड आई वर्क, शुड आई सपोर्ट और नॉट सपोर्ट? सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये दे आर नॉट डूइंग गुड, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे दूसरे लोगों के प्रॉपर्टी को, दूसरे लोगों की पत्नी को, द्रौपदी का वो वस्त्र हरण कर रहे हैं, पांडवों का जमीन हड़प रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
लेकिन इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, so should I not support them? So loyalty is good or justice is important? What is more important? Should I support justice or should I be loyal? क्या करना चाहिए? धर्म संकट। देखो महाभारत की कहानी जो 2-3 हजार साल पुरानी है, कितना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ला रहा है हमारे सामने। कर्ण बोल रहा है कि शुड आई बी लॉयल, बिकॉज देखो ये लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था, मेरा टैलेंट देख के मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था, सो शुड आई बी लॉयल और शुड आई से द राइट थिंग कि देखो तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, किसी दूसरे की जमीन हड़पते नहीं है, किसी के दूसरे की पत्नी का अब्यूज नहीं करते। अगर ये आजकल के टीवी डिबेट में जाएंगे तो लोग चिल्लाने लगेंगे, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, बट ये धर्म की बातें हैं एंड ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। कृष्ण वहां आते हैं और बोलते हैं कि तू डिसीजन ले रहे, तो बोलता है कि नहीं, आई विल बी लॉयल, आई विल बी लॉयल, मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं लॉयल रहूंगा। आई थिंक लॉयल्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग गुड। व्हाट इज गुड? गुड इज किसी की जमीन मत हड़पो, किसी की दूसरे की पत्नी को अब्यूज मत करो, दैट इज बीइंग गुड। तो आई नो कि कौरव आर नॉट गुड, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, लेकिन आई थिंक वैल्यू इज मोर, माई लॉयल्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो डिसीजन लेता है। तो कृष्ण वहां आके बोलते हैं अच्छा बाय द वे, ये जो पांडव लोग हैं वो तुम्हारे भाई हैं और अगर तू उनको सपोर्ट करेगा तेरे को राज्य मिलेगा, यू विल बिकम किंग। एंड कर्ण सेज नो 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 नो, लॉयल्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो वैल्यू देता है लॉयल्टी को। और कृष्ण कहता है कि एक समाज जहां जो बहुत स्ट्रांग होता है और वो वीक को सपोर्ट नहीं करता, वो कैसा समाज है? यू नो, इन द जंगल द स्ट्रांग विल ईट द वीक। इसको संस्कृत में मत्स्य न्याय कहते हैं। मत्स्य न्याय मीन्स लॉ ऑफ द जंगल, where the powerful eat the weak. Says if human civilization is also based on these values, कि जो strong है, कौरव is very strong, और वो पांडव जो छोटे हैं, उनके भाई हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी शेयर भी नहीं कर रहे हैं, वो जो आदमी अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी शेयर करने को तैयार है, कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार नहीं है, तुम उनके साथ लॉयल हो रहे हो, आर यू श्योर इट इज अ गुड डिसीजन? तो लॉयल्टी को तुमने ऊपर वैल्यू दे दिया, वेरी गुड, टिक मार्क। लेकिन जिसके साथ तुम लॉयल हो वो कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां पे वो किसी का भी प्रॉपर्टी हड़प सकते हैं बिकॉज उनके पास पावर है। He has all the power in the world. बिकॉज कल जाके किसी और का प्रॉपर्टी हड़प सकता है, तीसरे किसी और का प्रॉपर्टी हड़पेगा। आर यू श्योर तुम्हें ऐसे प्रॉपर्टी का निर्माण करना है, तुम्हें ऐसे राजा को सपोर्ट करना है? एंड कर्ण सेज नहीं नहीं, आई विल सपोर्ट, क्योंकि इन्होंने मेरे को रिस्पेक्ट दिया जब कोई दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, तो वो लॉयल्टी को वैल्यू देता है। इसको हम धर्म संकट कहते हैं। महाभारत स्टोरी में कृष्ण और कर्ण का स्टोरी हमको ध्यान से देखना चाहिए। कर्ण wants to be an archer, a soldier. वो बोलता है कि लोग मुझे ड्राइवर का बेटा बोलते हैं, मैं सारथी कभी नहीं बनूंगा, मैं रथी बनूंगा, मैं रथ के ऊपर बैठा रहूंगा। कृष्ण हमेशा सारथी के रूप में दिखाई देते हैं। कृष्ण कहता है कि मेरे को ड्राइवर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग मुझे जो भी बोलना है बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हूं कृष्ण, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुमको कितना फर्क पड़ता है? लोगों ने कुछ तो बोल दिया तुमको कि तू सुतपुत्र है, तुमको इंसल्ट लगा, तुम गर्व से क्यों नहीं, हाँ मैं सुतपुत्र हूं, बड़ा बात क्या है उसमें? प्रॉब्लम तुम में है, मुझ में नहीं है। तुम छोटे हो कि तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो मेरे पिताजी को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं। सारथी बनना कुछ बुरा नहीं है, तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, तुम में है।
लेकिन तुम में वो करेज नहीं था बोलने के लिए। नेवर लुक डाउन ऑन अ प्रोफेशन। कृष्ण के मंदिर में कृष्ण कभी राजा के रूप में नहीं दिखाई देते, वो ग्वाला के रूप में दिखाई देते हैं, सारथी के रूप में दिखाई देते हैं, विच आर नॉट बिग पोजिशंस, दे आर लो पोजिशंस। चरवाहा है, सुत है। तो एक जगह राम खड़े हैं जो राजा है। Why is he राजा? Because he was born in a royal family. He was the eldest son. उन्होंने चुना नहीं था राजा बनने के लिए, वो सर्कमस्टेंस ने दे दिया उनको. It is like being born in a rich family. You didn't choose to be born in a rich family. You are rich, ठीक है. Then Krishna is raised in a poor family, in a चरवाहा family. तो कृष्ण बोलते हैं कि ये चीजों से इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए. ये तो आना है जाना है, कभी राज्य होता है कभी राज्य नहीं होता है, सब चला जाएगा. एक दिन सब कुछ चला जाएगा. राम को देखो ना, राम जंगल में होते हैं, वहां पे कोई उनको पहचानता नहीं है कि वो राजकुमार है, बट राम इज शांत. कि जंगल में भी राम, अयोध्या में भी राम, चरवाहा ग्वाला भी कृष्ण, सारथी भी कृष्ण. आप कभी कृष्ण का फोटो नहीं देखोगे राजा के रूप में. इसको हम अवतार बोलते हैं. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ईगो का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं. यू नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमने कृष्ण का विश्व रूप सुना है ना, विश्व रूप, बिग विश्व रूप बनाते हैं कृष्ण ना. इन द महाभारत कृष्ण विश्व रूप 2 बार लेते हैं, 3 बहुत बार लेते हैं, बट 2 बार वेरी फेमस है. एक बार पांडवों के सामने और एक मतलब अर्जुन के सामने, और दूसरे टाइम कौरवों के सामने. जब अर्जुन के सामने लेते हैं तो लोग, अर्जुन बोलते हैं, ओ माय गॉड यू आर सो पावरफुल, आप प्लीज सिंपल हो जाओ. ही इज वेरी इंप्रेस्ड एंड ही सेज, ओ माय गॉड यू आर सो पावरफुल, आप अवतार, आप बिकम नॉर्मल एंड आई विल फॉलो योर एडवाइस. कौरवों के सामने जब वो रूप लेते हैं तो कौरव बोलते हैं, ये तो क्या अपने आप का मैजिक कर रहा है, कुछ तो मैजिक कर रहा है, हमको डिल्यूड करने के लिए, हमको भड़काने के लिए, हमको ही इज ट्राइंग टू फूल अस. सो कृष्ण रियलाइजेस कि भगवान होके भी मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता. इनफैक्ट यू कैन डू अ गूगल सर्च. व्हेन यू हैव गूगल सर्च, डू गूगल सर्च ऑन अनुगीता, ANUGITA. अनुगीता इज लिटिल सीक्रेट ऑफ द महाभारत, जो कोई नहीं बात करता इसके बारे में. महाभारत युद्ध के बाद हमने भगवत गीता, सब आजकल सब लोग भगवत गीता बोल रहे हैं. आई ऑलवेज टेल पीपल, आपने कभी अनुगीता सुना है? वो भी महाभारत में है. बट पीपल से नहीं, हमने कभी नहीं सुना. अनुगीता की कहानी बहुत ही मजेदार है. आफ्टर द महाभारत वॉर, पांडव जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, बिकम द किंग. उस समय अर्जुन जाते हैं कृष्ण के पास और बोलते हैं, डू यू रिमेंबर युद्ध के पहले आपने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था, जिसको हम भगवत गीता बोलते हैं. मेरे को कुछ याद नहीं. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, कैन यू प्लीज रिपीट. जैसे हम लोग टीचर के पास जाके बोलते हैं, सर आई डिडंट रिमेंबर, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है, आप प्लीज रिपीट, समरी दे दीजिए मुझे, समरी. एंड कृष्णा गेट्स वेरी एंग्री. कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, बोलते कि मैं उस समय इतना अच्छा 18 चैप्टर 700 वर्सेस का लेक्चर दिया, तेरे को कुछ याद नहीं है? तो नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं है. तो फिर वो अनुगीता देता. अनुगीता मीन्स स्मॉल गीता. बट फनी थिंग इज, भगवत गीता इज 18 चैप्टर्स, अनुगीता इज 36 चैप्टर्स. बिकॉज कृष्णा रियलाइजेस इसको कुछ समझ में नहीं आता है. व्हाट इज द बिग लेसन? भगवान भी अगर होगा तो ज्ञान नहीं दे सकता. ज्ञान आपको खुद लेना पड़ेगा, कोई आपको सिखा नहीं सकता. कृष्ण भी अर्जुन को सिखा नहीं पाए. नो टीचर ऑन अर्थ कैन मेक यू इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. यू हैव टू मेक, दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज. वो टेक्स्ट बुक देंगे, गाइड्स देंगे, कोर्स मटेरियल देंगे, दे विल मेक यू स्टडी, but they can't make you intelligent. They can't, most importantly, they cannot give you knowledge of the ego. ये नॉलेज आपको खुद ढूंढना पड़ेगा.
कोई भी इंस्टीट्यूट दुनिया में ईगो नहीं पढ़ाता है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम. वो आपको स्ट्रैटेजी पढ़ाएंगे, आपको टैक्टिक्स पढ़ाएंगे, केपीआई, केआरए, एक्सेल शीट, ऑल दैट दे विल लर्न, फेसबुक, ये सब, बिग विजन, टू बिग टू फेल, ये सब पढ़ाएंगे. व्हाट यू कांट एंड इज ईगो. और जहां पे भी जाओ बिजनेस में, यू विल रियलाइज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू हैव टू डील विथ इज ईगो. बॉस का ईगो, सबऑर्डिनेट का ईगो, कस्टमर का ईगो, शेयर होल्डर का ईगो, पार्टनर का ईगो, फैमिली का ईगो, पेरेंट्स का ईगो, बच्चे का ईगो, फ्रेंड्स का ईगो, सब जगह ईगो. सुपर हीरो ईगो को नहीं मैनेज करता. ईगो को मैनेज के लिए हमें अवतार की आवश्यकता है. अवतार का मतलब है अपने बड़े घोड़े से नीचे आओ, अपने रथ से नीचे आओ. भगवान भी वैकुंठ से धरती पे आते हैं ईगो को मैनेज करने के लिए. और भगवान एक चीज सीख जाते हैं कि मैं पूरा भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भी वे लोग सुनते नहीं हैं. फिर भी ट्राई करते रहते हैं कि नहीं यार, कोई तो कुछ सीखेगा. रावण जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी हनुमान से कुछ नहीं सीखा, अर्जुन भी नहीं सीखा, कर्ण भी नहीं सीख रहा है. ऑल केपेबल, ऑल इंटेलिजेंट, ऑल स्मार्ट, सब में क्षमता है सीखने की, इच्छा नहीं है. क्षमता, केपेबिलिटी है, संसाधन भी है, संसाधन, रिसोर्सेस. यू हैव द केपेबिलिटी, यू हैव द रिसोर्सेस, बट यू डोंट वांट टू. बिकॉज हमको बड़ा बनना बहुत अच्छा लगता है, टू डोमिनेट, टू कंट्रोल, एंड दिस रियली कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी. हमें लगता है कि कोई मेरा चीज छीन लेगा. दिस इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है हमारे अंदर आजकल, मेजर यंग पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी. इट्स अ बिग प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री. इंस्टाग्राम हम देखते हैं, हमारा दोस्त का अच्छा शर्ट है, अच्छा कपड़े, उसको ज्यादा लाइक्स आ गया, मेरे को इनसिक्योर लगने लगता है. फेसबुक में जाते हैं, उसको ज्यादा लाइक लग गया, उसका स्टोरी वायरल हो गया. और टिकटॉक, व्हाट इज दैट, इंस्टाग्राम रील्स में हिज स्टोरी हैज बिकम वायरल. इनसिक्योर. मैंने अच्छी साड़ी पहना है, आई वॉर गुड ज्वेलरी, माई फ्रेंड वॉज गुड ज्वेलरी, आई गो टू अ पार्टी, सब उसको देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं इनसिक्योर हो गया. इनसिक्योरिटी सब जगह है. और पूरे हमारे शास्त्रों में कि भगवान का एक ही काम है, ये इनसिक्योरिटी को मेरे को मैनेज करना है. एंड ऑल स्टोरीज इन इंडिया डील विद दिस वन प्रॉब्लम. देसे नहीं, खाना मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा. ईगो को से छुटकारा बहुत मुश्किल है. एंड दैट इज द बिग इंडियन आइडिया कि ये ईगो को मैनेज कैसे करें. दैट इज व्हाट ऑल आवर स्टोरीज आर ऑल अबाउट, जो मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाएंगे हमको, बिकॉज वो नहीं जॉब है. दैट इज नॉट द जॉब ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. इट इज आवर जॉब. We have to ask ourselves, why do we get insecure? What makes us want to dominate people? ये डर कहां से आ रहा है? वो just by drinking some cold drink, वो डर से आगे जीत है. जीतने के बाद क्या करोगे? वापस इनसिक्योरिटी आ जाएगी. फिर वापस जीतोगे, फिर वापस इनसिक्योरिटी आ जाएगी. फोमो होगा, फोमो, फियर. ओह माय गॉड, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. सबको पार्टी हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है. आफ्टर सम टाइम एवरीबॉडी इज गेटिंग मैरिड, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. ओह एवरीबॉडी हैज चिल्ड्रन, आई डोंट हैव चिल्ड्रन. ओह एवरीबॉडीज चाइल्ड इज डूइंग वेल, माय चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल. वो सब जगह कंपटीशन होने लगता है. एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स. सो व्हेन समबडी आस्क्स मी कि देवदत्त, इंडिया में सीखने को क्या है, दिस इज इट. The Western management model celebrates insecurity. Compete करते रहो, लड़ाई करते रहो, लड़ के जीतो, लोगों को हराओ, कंटिन्यूअसली आपको इनसिक्योर करता रहता है. इंडियन थॉट कहता है कि देखो, दुनिया विदाउट इनसिक्योरिटी बहुत अच्छी है.
And you know what is the easiest method of handling insecurity? The easiest method, the Hindi word for it is darshan karo. Darshan. हम मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, भगवान के बड़े बड़े आंखें होते हैं, श्रीनाथ जी के आंखें होते हैं, अब जो भी मंदिर में जाओ, जगन्नाथ के गोल गोल आंखें होते हैं. ये आंखों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? सबसे सिंपल मेथड ऑफ हैंडलिंग इनसिक्योरिटी इज, जहां जाओ देखो लोग कितने इनसिक्योर हैं, दर्शन करो, लुक. कृष्णा इसलिए हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो ये भी इनसिक्योर है, ये भी इनसिक्योर, कौरव भी इनसिक्योर है, पांडव भी इनसिक्योर है. You know, there is a very famous story in the Mahabharata. In the last chapter, I don't know if you have read the Mahabharata ever. Nowadays there are summary versions, पूरी बुक का पढ़ने की जरूरत नहीं है. Last में Kauravs land up in heaven. Now Pandavas are good guys, Kauravs are bad guys. तो theoretically पांडव को heaven जाना चाहिए और कौरव को hell जाना चाहिए. लेकिन महाभारत में इसका विपरीत होता है. महाभारत में the Kauravas, the bad guys goes to heaven and the good guys go to नरक. और युधिष्ठिर बोलता है कि ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये गलत है. तो कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुमने कौरवों को हरा दिया ना बैटल में, युद्ध में तुमने हरा दिया उसको. सर हाँ मैंने हरा दिया. इसे मैंने तुमको हेल्प किया, उनको वॉर में तुमने जीता. यस मैं जीता. 36 years you ruled their kingdom. वो लोग तो मर गए. 36 साल तुमने उनका किंगडम कंट्रोल किया, अभी तक उनको क्षमा नहीं किया. कब क्षमा करोगे? डेडलाइन क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है फॉरगिवनेस का? बिकॉज कितना पनिश करोगे उनको, कितना? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 36 साल तुमने राज किया है उनके राज्य के ऊपर. पूरा किंगडम जो उन्होंने हड़प लिया था तुम्हारे अंडर आ गया, उनको मार भी डाला. अभी उनको मैं स्वर्ग दे रहा हूं, तुमको टेंशन क्या है? जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा. कब तो छोड़ो. दिस इज व्हाट द महाभारत इज टीचिंग, कि तुम्हारा जो शत्रु है, कभी ऑफ कोर्स यू डोंट लाइक सम पीपल, बट कभी तो एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग हैज टू हैव एन एक्सपायरी डेट. जेलसी नीड्स एन एक्सपायरी डेट, हेट्रेड नीड्स एन एक्सपायरी डेट, प्राइड नीड्स एन एक्सपायरी डेट. हर चीज का एक्सपायरी डेट होना चाहिए. लेकिन कोई भी ऐप विल नॉट गिव यू दिस. हमारे जितने भी ऐप है, इट विल टेल यू हाउ टू लूज वेट, हाउ टू मेक मनी, हेल्दीफाई मी, ज़ेरोधा, वो सब ऐप पैसा बना लेगा, ब्यूटीफुल बॉडी बना लेगा. शादी.com में जाके मेरे को शादी भी मिल जाएगी. टिंडर में कुछ आप मिसचिफ भी करोगे, सब करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक भी ऐप नहीं मिलेगा जहां पे हम अपना अहंकार को ठंडा कर सके. ये कोई ऐप सॉल्व नहीं करेगा. यू कैन गो टू द रिचेस्ट मैन, बिल गेट्स के पास जाओ, मुकेश अंबानी के पास जाओ, जेफ बेजोस के पास जाओ, इलॉन मस्क के पास जाओ, उनको बोलो कि अहंकार कैसे कम करे सर, बता दो. वो नहीं बता पाएंगे. भगवान भी उससे झुक रहे. एंड दैट इज द बिग लेसन फ्रॉम इंडिया, विच यू वोंट फाइंड इन चाइना एंड यू वोंट फाइंड इन द वेस्ट. कोई भी हार्वर्ड में जाओ, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको. वो हैप्पीनेस के बारे में लेक्चर्स देंगे, ईगो के बारे में लेक्चर नहीं देंगे. चाइना में नहीं समझ में, उनको समझ में भी नहीं आएगा. जापान में कोई नहीं बात करेगा. कहां नहीं आएगा? हमारे शास्त्रों में जो पढ़ाते हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, भगवा वस्त्र पहनेंगे लेकिन है अहंकार. देखो मैं बड़ा हूं, तुम मेरे पैर पे चढ़ो, पैर पे नीचे बैठो. यू विल सी ऑल दीस गुरुजीज आल्सो वांट टू सिट ऑन अ पेडेस्टल. तब रावण की कथा याद रखना. गुरुजी भी कहेगा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं बहुत सिंपल आदमी हूं, मैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन सब मेरे सामने सर झुका. हर गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पास फैमिली नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो सिंपल आदमी हूं. लेकिन प्लीज अगर तुमने सर नहीं झुकाया, गुरुजी को बहुत गुस्सा आएगा. अगर तुमने गुरुजी को, आई हैव ऑलवेज डन दिस गेम, व्हेनेवर आई मीट सम ऑफ दीज स्पिरिचुअल पीपल, मैं उनके सामने जाके चेयर में बैठता हूँ, क्योंकि सब लोग फ्लोर में बैठते हैं.
मैं चेयर में जाके बैठ जाता हूँ और मुझे वो हंसी आती है because I can see the discomfort. But amongst them एक आध बार एक गुरुजी मिलेंगे जो बोलेंगे कि अब मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, and they start laughing. और आंखों ही आंखों में हमको समझ में आता है कि हम आत्मज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं. And that is the magic moment. That is the magic moment. When you realize कि ये सब important नहीं है life में. Yes, if you are a mango tree, you have to produce mangoes. But that doesn't mean you're better than a jackfruit tree. It doesn't mean you're better than a guava tree. It doesn't mean you're better than a jambu tree. It doesn't mean you're better than an akshayvat or a banana tree. So if you are meant to be a great businessman, wonderful, but तुम जंगल में एक ही पेड़ हो और हर पेड़ के जैसे एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा और दुनिया में किसी को याद नहीं है किस पेड़ से आम आया था. हम आम एंजॉय करेंगे लेकिन हमको याद नहीं किस पेड़ से आम आया था. So remember, we are all trees. We are all producing. Some trees grow big, some are small, some are summer trees, some are winter trees. Some will give fruits after 10 years, some will give fruits in 1 year, but all trees have an expiry date. So enjoy being the great tree, produce great flowers, produce great fruits, and may you be successful in your life. Thank you so much. Namaste. Thank you so much, sir, for your insights. It has helped us immensely and guided us towards wisdom. So we have few questions from our attendees. Taking the first one. Society recognizes money people, powerful netas. They have mostly supreme egos, pride. How common poor people benefit from them? Corruption, dadagiri by people with power. How India can prosper with development of commoners? See, it is not just people who have money who have ego. It is not just people who have fame who have ego. Ego is everywhere. Just because you have no money doesn't mean you don't have ego. Just because you don't have power doesn't mean you don't have ego. Just because you don't. So we must remember, ego has nothing to do with money and power. Even without money, you will have ego with ego. So you have to ask yourself, those who don't have money will say, when I get money, I will have less ego. That is a different conversation. Money and power and fame are different and ego is different. Ego is a journey by itself, or you can be rich with ego and without ego. You can be powerful with ego and without ego. And there's only one indicator. There's only one indicator when a person, you know, the person is more generous. Generosity is the only indicator of spiritual development. That you will create opportunities for others. You will keep creating opportunities for others. That is the only indicator of spiritual growth. कि दूसरों के लिए कुछ करना. Continuously doing that. That is the, and it's very difficult. It's not easy doing that. बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल. Thank you, sir. Taking up the next question. So why every India darshan, both Nastik and Astik, is based on the self, either affirming it or negating it, not in an heaven like the major Abrahamic religion thought? See, ahankar is a very Indian concept. You don't find it in other religions, and it is perfectly fine. And whether it's Astik, Nastik, these are all details. Ego is a very important idea in Indian thought. So every thought, for example, law is a very important idea in Western thought. It is not a very important idea in Indian thought. Indian thought, law ke upar hum log zyada value nahi dete. Law is a very important thought in Western ideas. So the West talks about law all the time. Indians talk of ego, but we don't talk nowadays. Nowadays, we don't talk about ego at all. It is not part of our education system at all. Chinese talk about totally different ideas. They talk about harmony. They talk about the concept of harmony, and we don't talk about it anymore. We don't talk about harmony, balance. That's the Chinese thoughts. So every culture will have different ideas, which is perfectly fine. Okay. So the next question is, do you believe that getting inspired by mythology and using it in today's era has a greater impact? Well, it has a greater impact for me. It may not work for everyone.
So I get a lot of inspiration from mythology. Other people will not. It's fine. Okay, sir. Thank you, sir. So next question is, what is your idea of religion in the workplace? Well, my idea of religion in the workplace is, are you a nice person? That is the only thing which is important. Wearing a tilak or wearing a hijab or wearing a Mangal Sutra or doing some rituals in the house or doing aarti every day is not religious. Religious, are you a nice person? Do people like to work with you? Do you energize people? Are you like the sun or are you like the black hole? The sun gives energy, the black hole takes energy. So you have to decide. If you are giving energy to people, helping people be better, be creating opportunities constantly, then you are in a very good spiritual place. If you're not creating opportunities for people and you're only consuming opportunities, then you're not in a spiritual place. So, बाकी सब भगवान भगवान वो सब माध्यम है. Thank you, sir. So next question is, there is so much to learn from mythology. Still, our current generation isn't aware of the invaluable lessons. How, according to you, we may increase the exposure to mythology, especially for the younger generation? Very simple. Just buy my books. So just go to the bookshop. How many of you all have buy books? Go to of your own free will. Go to a bookshop, preferably an independent bookshop, and buy Devdad Patnayak's books. That is a step one. If you can't afford, then go to devdad.com and get free articles and read it. But as I said, even it is very difficult. This is a very personal and private journey. You can't force people the way the government is trying to force you read this. ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे. These are all foolish activities. जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा. As I said, Bhagavad Gita, Krishna gives 700 verses, 18 chapters. फिर भी अर्जुन बोलता है कि please summary दीजिए. Give me a, what is it called? Multiple choice question दे दीजिए. Sure, sir, we buy that. So next question is, does power increase ego? No. There is no connection between money, power, fame, and ego. Ego is a different topic altogether. And that's one of the biggest lessons I have learned. I have seen people who have a very powerful, who know that this power comes and goes. And there are people with no power who are so egotistical that it is not funny. So ego is a different conversation. उसको कुछ लेना देना नहीं है पैसे के साथ, power के साथ. It is a very personal and private conversation which it's a psychological problem. It has nothing to do with material things. It's psychological. And it is very, very, as I said, over the years I've realized just because you are rich doesn't mean you are good or bad. Rich people can be very nice. Rich people can be very mean. Poor people can be very nice. Poor people can be very mean. So we should separate this. We should separate this. Sure, sir. So next question would be, what has helped you to get where you are? And what advice would you give someone who want to set off in a similar direction? So I work very hard and I, don't care whether it works or doesn't work. So I keep working. I just keep working every day. Even now I write for 6 hours. I will do research. So, and it doesn't mean everything I do will work or people will like it. It doesn't matter. You keep working. Yes, sir. So keep working is the mantra. So next question would be, so what according to you are the qualities that the leader should imbibe, especially post-COVID times when a lot of employees need motivation and support? I think leaders should allow people to take decisions and, balance work and life. I think that is a big conversation that is happening because we are reorienting ourselves to a new world order. 2 years you're staying at home and working. So you have to be a little flexible right now. And you'll have to, for at least 1 year, maybe 2 years, you don't have to be very strict. You have to just sort of keep balancing and nudging people for at least 1 year so that they come back to a kind of a routine. अभी बहुत strict होने से कोई फायदा नहीं है. At least for 1 year, you have to be a little, you have to give a little shoot to people. Just allow people for 1 year. After 1 year, you can be a little bit more strict. But I think for 1 year, it's better to be a little relaxed. Thank you, sir. So next question would be, how can Indian mythology be used to progress in business career
or corporate career? See, when you understand Indian mythology very well, you will know how to negotiate better. You will know how to handle conflict better. One of the things we are noticing that across the world, some of the top senior CEOs are of Indian origin. That means they were educated in India. And people are wondering why, because they have the same qualifications and the same experience as their colleagues. So what is the reason why these Indians are being put in such major positions of power? And one of the thesis is that they have, for some reason, able to get people to work together. They are not toxic, which means they don't have ego. They balance and get people together, which means, they don't have that masculine quality of I am bigger than you, I'm better than you, I'm smarter than you. They don't try to dominate. They have a very feminine quality of chalo saath mein leke chalte hai, taking the family along, dealing with difficult relatives, dealing with difficult children. How do you keep a family together where all kinds of crazy people are there in your family, but you have to manage them? That is leadership in the new world order, not being this aggressive, I'll drag everyone and everybody has to follow me, otherwise I'll beat you up. This toxic method is not appreciated. It is a more feminine, soft, gentle approach of working with people who are very difficult. And I think that is the skill required. Thank you, sir. So one question is, what according to you is the most difficult part of being a motivational speaker? Well, I think that I always ask myself, why are you called to motivate people? When somebody is getting a salary, they should be motivated to work on their own. Right? Students don't need motivation. They have, because if they don't study, they won't get a job. If they don't work, so the motivation andar se hi aana chahiye. So bahar se motivation kyun hai? Because I suddenly realized that human beings are lazy. And my job is to I am really dealing with people who are lazy. And you don't have to motivate a mango tree to produce mangoes. You don't have to motivate a jackfruit tree to produce jackfruit. You don't have to produce a rose plant to produce rose, but human beings seems to need motivation to do their job. And you see, that is the toughest part, to realize this realization, how different human beings are from plants and animals who don't need any motivational speaker. Thank God for that, because then that's how I make my living. But that's a realization, right? No plant needs motivation. No animal needs motivation. The only species on earth who needs motivation is human being. Thank you so much, sir. Taking up last two questions. So why is the West power of the state was in the hand of religious authority, and in India there was a proper class for ruling the kingdom through getting advice from the priestly class? So see, it's not good or bad. In India, in some cultures, they believe there are different models. So the Western model is based on equality. Everybody is equal, and therefore you have only one central power. In India, equality was not respected. Everybody was diverse. There were different power centers, and they have to work together. Now, what happens in the Western model? That central power can become corrupt. And when it becomes corrupt, it starts creating feudalism. In India also, this system can become corrupt, and we created caste system, we created untouchability. So, dono system mein अच्छे भी points hai, बुरे भी points hai. You have to do SWOT analysis in both places and be very careful of this tendency. The moment you start saying that India is better than others, ahankar ki shuruaat ho gayi. And if somebody says West is better than India, wahan pe bhi ahankar shuru ho gayi. No system is better or worse. Everybody, there are sometimes they work, sometimes they don't work. There are Chinese systems which work brilliantly in China, but not always. They have not always worked. Sometimes they have failed. Same way, Indian systems have worked many times, but many times they have failed. Western systems have worked many times they have failed. So every system, you have to do a SWOT analysis. Indian model is based on diversity, which tends towards hierarchy. The Western model is based on equality, which tends towards homogeneity, standardization, uniformity, and does not allow for individual growth. Thank you so much, sir. Taking up last question. So the question is, did the Panchatantra story travel around the world, and some of them got absorbed in Aesop's fables? Well, it's the other way around is also true.
So we really don't know who traded whom. So what happens is Indians like to say, देखो देखो हम लोग कितने smart थे, हमारी stories अभी ESOP table बन गई. So be very clear. Whenever you ask this question, in my head I'm asking, why is this question being asked? Is it only for information or is it for ego? And you know the answer, right? We know that the person asking this question is not just asking because he wants to know information, because that he can Google. But he is asking Devdad Patnaik so that he can nourish his ego. Beware of the Ravan inside us. Hanuman is laughing. Thank you so much, sir. Over to you, Pradna. Thank you, Millie, and thank you, sir, for answering all our questions. On behalf of DSIMS and DSGS, I would like to take this opportunity to thank all concerned for making this session successful. First and foremost, I would like to thank Mr. Devdad Patnayak for sharing his valuable insights on how ego is the biggest problem and how spiritual growth is more important and how you need to be generous. So thank you so much, sir. And I would like to thank our President RSET, Sri Ashok Ji Saraf, for his unwavering support for the session. Thank you so much, sir. I would like to thank all trustees and guests for witnessing today's event online. I would like to thank our Director of DSIMS, Dr. Babu, and Director of DSGS, Dr. Sarita Vichore, for always guiding and encouraging us all throughout the process. I would like to thank Dr. Sarika Jain for helping us conduct this session. Thank you so much, ma'am. Special thanks to Mr. Vikas, Marcom team, IT support, and PV advertisers, and Ms. Parvati for all their support. I would like to thank my co-anchor, Ms. Millie, for her support for the session. Last but not the least, I would like to thank all for being such a great audience. Thank you so much. Thank you, Devdad. It was wonderful. Thank you. It was very nice, and I look forward to meeting you sometime, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure to have you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.